देख कैसे आ रही हो. अजय या ओके ओके कोणतरी आहे मध्ये. दीपिका जी यश बस मैडम मैडम लेफ्ट में देखो मैडम सामने देखिए दीपिका जी सेंटर दीपिका जी ये सेंटर प्लीज ऑन द लेफ्ट सेंटर मैम इस तरफ दीपिका मैम यहां पे मैम ऊपर सेंटर दीपिका मैम मैम आपका फैन यहां पर अरे एक अरे इधर भी है यार वो फैन नहीं है अरे बड़ा फैन है इधर. हाँ जी मैडम जी सेंटर क्या कर रहे हैं आप जब से यार लुक हियर मैम सेंटर दीपिका लेफ्ट दीपिका जी राइट दीपिका जी राइट मैम सामने एकदम दीपिका मैम हियर मैम राइट दीपिका मैम हियर या मैम वेट दीपिका जी ऊपर चलो पूरा फोटोशूट हो गया. थैंक यू. हाँ, so quiet everyone. What happened? Tired. happy evening to you. You look towering, you look strong, you look powerful. Thank you. Yeah. Done? Thank you. We start by congratulating you like for completing 9 years officially, like with the release of your film. Many congratulations for that. Thank you. So, any words for it? Like how does it feel? It feels amazing. I don't feel like I've completed 9 years. Like I always say, I feel like I've just started off. And I feel like I have a lot more to give. I feel like I'm ready for even more challenging roles and even more challenging films. And I'm excited about one of those experiences because Padmavati is going to be extremely difficult. And but I'm ready. I think I'm ready for that experience and for that journey. Now you are part of the international red carpets now, walking the red carpet here, MTV and now here. You finding a difference or like It's exactly the same. It's always fun to dress up and to get ready and then to interact with the media and interact with your fans who are on the red carpet. It's always fun. वहाँ पे कैसा रहा? कहाँ पे? कैसा ना? जो आपने देखा वही. It was great fun. I love music and it was amazing to watch some of these artists perform live. I think as an actor, to just watch some amazing performances, I think, you know, I've really learned a lot. No, you say. No, you say. नहीं, आप क्या बोल रहे थे, आप बताओ. कौन? No, he was asking the question. He should ask properly. नाम तो याद कर लो ठीक से. You'll know soon. Deepika, आज की ceremony के बारे में बताइए. A legacy of drugs. Yes. We saw the ad in which you were taking the baton forward. तो उसके बारे में शर्मिला जी ने स्टार्ट किया. She was the first and now the ad. उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? I think it was definitely an iconic moment for me because Sharmila ji, of course, but I've grown up watching Madhuri ji and Sridevi ji, and to share screen space with them and to be named in the same league and category as them, I think for me was a huge honor. Like I said, it's only been 9 years and I feel like I have a long way to go. But it was a huge honor, and most importantly, all four of us had a lot of fun when we were shooting. We were all very happy that we were all getting to work together. And this evening again, I'm going to meet everyone. Mr. Shahrukh Khan है part इसके लड़के जो देखा ज़्यादा main stars कभी हुए नहीं. Mr. Shahrukh Khan is the only one who is part of the
I don't know if I can comment on that because I don't know in what capacity he's associated with the brand, so I can't comment on that. I wouldn't know that, but he is he is definitely hosting the evening along with Karan and a lot of amazing performances. But that's all I know. Deepika, मेरी colleague पूछा था, since this is a tribute to women और कई women हैं जो acid attacks के victims रहे हैं, तो उनके लिए and they have come out strongly and bravely. Any words for would you like to express for them? Yes, but having said that, I don't think it should be discussed in such a frivolous manner. I think there is a time and place for everything. When we comment on certain things, I think there is a time and place for everything. Having said that, I've interacted and met a lot of them in the past, and I have a lot of love and respect for them. दीपिका, गवर्नमेंट ने जो 500,000 की नोट बंद किया, क्या वो गवर्नमेंट का सही डिसीजन है? आपको क्या लगता है? Absolutely. I think it was high time, and I won't comment too much on it, but I think it was an exceptional move by the government and by the minister, and I would like to congratulate them on that. Thank you. About your next film, we've heard that you are having India premiere for Triple X. So will we see when and the other cast will come to India? Hopefully. I've spoken to them a lot about India. They all know a lot about India. And obviously, I want to, most importantly, the amazing experience that I had while filming this movie, I want to share that experience with everyone. And yeah, so I will, hopefully, all of them will be here. One last, Om Shantyam will be made in Japanese now? It's going to be a Japanese play, if I'm not mistaken. It's not going to be. I mean, I'm sure they've already translated the movie, or maybe it's already been made in Japanese. I'm not sure. But Farah called me the other day, and she said they're making it a play, and they all loved Shanti Priya, and the premiere of that is going to be in July next year, and most probably Farah and I will be going together for that. Thank you so much for presenting. We are following a sort of a lineage, like of a flying face. If you feel comfortable for the camera, For you. Thank you. यहाँ Thank you. Again. Thank you. Thank you. हेलो मैडम इधर ही रुक जाओ बस मैडम जी बस अरे एक मिनट साथ में एक पिक्चर साथ में एक पिक्चर अरे भाई थोड़ा पीछे अरे चेतन पीछे आना यार क्या कर रहे हो इतना आगे भाई थोड़ा पीछे आ जाओ एक्सक्यूज मी मैडम आपके लेफ्ट में इसका मत भाई थोड़ा फोन पीछे मैडम सेंटर प्लीज मैम एक मिनट जय भरकुम्मा मैम यार सेंटर एक्सक्यूज मी मैडम यार मैडम यहाँ पे मैडम चेतन बाबा तू थोड़ा पीछे आ जा तुम लोग ना कभी satisfied नहीं होगे। ये भी करना पड़ेगा। Hi, thank you, and to you too. Many congratulations for your film. Thank you. It passes a landmark in terms of box office collections. कुछ कहना चाहिए? What's your Obviously मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जितना प्यार मुझे साल मिला है with Sultan and
Edil, I mean, I really feel very very grateful. तो ये दौर चल रहा है और मैं इसको enjoy कर रही हूँ and I'm very grateful कि मुझे ये मौके मिल रहे हैं to show different facets of me as an actor. We are so happy to see you. मतलब आप पहले काफी दिनों बाद हमसे बातचीत करी. You saw that how the photographers were excited. उनको तो मैं मिलती रहती हूँ एयरपोर्ट्स में for airport looks. पर हमारे साथ भी बहुत दिनों बाद जी आप ही सवाल पूछे और कोई नहीं पूछे How was the reaction of Kareena? Hello, hi, how are you? Hello, hi, how are you? Okay, bye, Tata, thank you. नहीं मजाक करो यार आप उनके साथ आप ही के लिए आया हूँ Very good, everybody is very good. And I will not talk for anybody, so you should ask them. जैसे मैंने बोला ये साल मेरे लिए बहुत स्पेशल रहा है. कितना चिल्ला रहे हैं लोग, क्या करूँ? तो बहुत स्पेशल रहा है बिकॉज सुल्तान और एदिल है मुश्किल दोनों फिल्में रिलीज हुई हैं मेरी और नॉट जस्ट दैट दोनों पिक्चरें सक्सेसफुल हुई हैं और इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई हैं बट मेरे कैरेक्टर और मेरी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है तो ऑब्वियसली हर एक्टर के लिए वो सबसे बड़ी बात होती है. तो इट्स गोइंग वेरी वेल, बहुत अच्छा जा रहा है मेरा साथ. और the ring for the evening, कुछ बताना चाहिए you performing or your part? So I'm performing. So this will be my first performance of the year. So I'm quite excited. लाइव परफॉर्मेंसेस करना बहुत मुश्किल लगता है बिकॉज यू वेरी स्कैर्ड कि नर्वसनेस होती है परफॉर्म करने से पहले बट जब आप स्टेज पे होते हो तो बहुत अच्छी फीलिंग भी होती है. सो या आई एम हैप्पी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द परफॉर्मेंस एंड आई होप एवरीथिंग गोज वेल. Mr. Shah Rukh Khan is also he's co-star in your next film also and part of the ceremony also. Are you performing with him? No, it's a solo performance. ओके थैंक यू गाइस. रिंग के बारे में भी अगर आपको अभी बहुत टाइम है उसके लिए तो बाद में बात करेंगे उसके बारे में. अनुष्का की बात हो रही है क्योंकि तो आपसे जानना चाहिए कि आपकी लाइफ का पहला रोज आपने दिया हो या आपको किसी ने जो कुछ याद है आपको ऐसे मेमोरी को शेयर करना चाहिए आपको? नहीं याद ही नहीं आ रहा. अनुष्का वुड यू लाइक टू ऐसे हो सकता है मतलब सच्ची में याद नहीं आ रहा है. ऐसे कौन याद रखता है मेरा पहला रोज मुझे किसी ने दिया था? याद रखते हैं लोग? किसी ने नहीं दिया. Anushka, how are you dealing with the recent decision of our PM, five? I think I've tweeted and I've expressed my feelings on Twitter, and that's as much as I'd like to say on that. I think it's a very very bold initiative, and as citizens, we all should take part and go through these immediate problems that we're facing right now, and in the long run and for the larger good of the nation, this is going to help us all. So let's all stick together and support this. One of my colleagues wanted to ask, since it's a tribute to women, Where's your colleague? पीछे है मतलब यही तो वो wanted to ask you like since it's a tribute to women, many women who have gone through some unpleasant experiences of acid attacks, they have come strongly, more bravely. So any words from for them would you like to say? The thing about women is that बहुत एक inner strength होती है जो बहुत quiet strength होती है. एंड हर औरत एंड हर वो इंसान और वो आदमी जो ये चीज़ इन औरतों में देख सकता है वो समझेगा कि वही एक्चुअली उनकी सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी ब्यूटी होती है, सबसे ख़ास बात होती है. बाहर से आप कैसे लगते हैं इज़ नॉट रियली इंपॉर्टेंट. इट्स हाउ यू आर फ्रॉम इनसाइड, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ यू होल्ड एज अ वुमन दैट एक्चुअली डिफाइंस यू. एंड आई फील लाइक if this is the way we are going right now, the way women are expressing themselves so openly and how everybody is talking about working towards women empowerment and everything else, I think it's a very good time that we are living in, and I think we all should just work together towards making it a better country, because when everyone's happy and the women are doing well in the country, kids are doing well in the country, you'll be a successful economical nation. Thank you so much. We are hoping you get lots of awards. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. अरे तांबे पीछे आना.
इधर ही रुकिए मैडम जी। I'm on the left. Ma'am here. Ma'am here. Jacqueline left. Jack. Excuse me, Jacqueline. No. She's wearing Paolo Sebastian. Hello. Hi everyone. आज शाम क्या स्पेशल है कि एक्चुअली ये अवार्ड द लक्स गोल्डन रोज अवार्ड्स आर स्पेशल अवार्ड्स इट्स देयर फर्स्ट ईयर एंड इट्स completely dedicated for women so and we have like some iconic women here today like Sri Devi and you know just to name a few and yeah I think it's very very exciting that you know we can have such an award like this today. स्पेशल डिज़ाइन मुझे पता नहीं लेकिन हाँ बिल्कुल एक्चुअली ये स्पेशली एक्चुअली गोल्डन लक्स अवार्ड्स के लिए क्योंकि इट्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड आई थिंक इट्स जस्ट एक खास ड्रेस आई थिंक एक खास ओकेजन के लिए एक खास अवार्ड के लिए. पाओलो सेबास्टियन. ओके हाँ जी हाँ ठीक है गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो इट्स वी आई मीन हैव टू वी वोटेड फॉर द गवर्नमेंट सो वी हैव टू. एक प्रॉब्लम क्या आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी जो इस तरीके का डिसीजन लिया गया है क्योंकि नहीं सिर्फ जब मैं एक्चुअली ऑटो लेती हूँ तो चेंज नहीं है तो वो बहुत तकलीफ है मेरे लिए एक्चुअली. Good evening, sir. How you have been like lots of काफी काम चल रहा है you know like you have been part of films. मेरा खुद के फिल्म की बात कर रहे हैं. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. बस अभी बोलिए क्या सवाल है. मैं वही पूछा था कि like how has been the shoot and everything. हाँ अभी बहुत एक लंबे शेड्यूल के बाद हम वापस आए हैं. हम 2 महीने से पहाड़ों में थे मनाली में हिमाचल प्रदेश में और अभी वापस आए हैं बस कुछ दिनों पहले और अब बस 22 तारीख से लास्ट शेड्यूल शुरू हो रहा है हमारा ट्यूबलाइट का बॉम्बे में और बस जनवरी तक ख़त्म हो जाएगा. कभी सबके यहाँ पे पूछ रहा हूँ आपने ट्वीट तो कर ही दिया फोटो भी कर दी लेकिन क्या सही में ऐसा कुछ मनमुटाव हुआ था मतलब जो लोग कहते हैं मैं तो वो पूछ रहा हूँ. हाँ देखिए एक्चुअली ये मैं रूमर्स में बिलीव नहीं करता लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि जब भी ये ऐसा एक रूमर आता है ये एक था टाइगर में भी आया था बजरंगी भाईजान में भी आया था एंड देन यू नो द फिल्म्स वेंट ऑन टू डू द बिजनेस दे डिड. तो आई थिंक ये अच्छा है ये अच्छा एक शगुन है कि अगर एक ऐसा रूमर आया है तो ट्यूबलाइट के लिए भी अच्छा होगा. कभी one of my colleague wanted to ask you कि like since this is for women empowerment and लेकिन उसी के साथ में ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे पिछले साल उनका पंजाब आई थी there are certain people who goes through substance abuse and they overcome it and come across. तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे especially the youth अगर if you want to like give some words of encouragement and for them. I think इसमें words of encouragement यही है कि obviously if they must have the power, the will power to be able to get out of that habit. बहुत मुश्किल होता है because once you fall into substance abuse, I've known people, I've known my friends from my college days who went through that, and it takes a lot of willpower and strength. And all we can do is just offer them support and be there for them when they're trying to come out of that because it's not easy. One more thing, have you adapted like for 2 days now about the social economic turbulence which has happened like so are you overcome like those things like 1,000, 2,500? जी फॉर्चुनेटली फॉर मी पर्सनली इतनी दिक्कत नहीं हुई बट एज आई एम ड्राइविंग अराउंड द सिटी एंड सीइंग जो लोग बेचारे खड़े हुए हैं
बैंक्स के बाहर ये काफ़ी उनको दिक्कत हुई है एंड आई विश इट वाज प्लान्ड स्लाइटली बेटर. इट्स अ ग्रेट मूव इन प्रिंसिपल, लेकिन आई थिंक लॉजिस्टिकली अगर ये ज़्यादा बेटर प्लान होता तो जो कॉमन मैन है उनके लिए इतनी दिक्कत नहीं होती. एकता टाइगर का आपके से बनेगा, ये खुशी की बात है सबके लिए. मतलब जी 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 कुछ अगर प्रकाश डालना चाहिए, कुछ मतलब जी. मैं नहीं बना रहा हूँ, वो आप जानते हैं मेरे दोस्त अली अब्बास जफ़र बना रहे हैं. लेकिन हाँ वो एकता टाइगर का पार्ट 2 सीक्वल बना रहे हैं. टाइगर जिंदा है, विल बी अ बिग फिल्म. कटरीना कैफ एंड सलमान खान विल बी कमिंग टुगेदर. इस बार काफ़ी अवार्ड फंक्शन की शुरुआत होगी. आप लेकिन स्मेल आ रही है हवाओं में, यहीं पे और भी मतलब अवार्ड फंक्शन, आपको अवार्ड की गंध आ रही है? जी पिछले साल कुछ ज़्यादा हो गया था थैंक्स टू बजरंगी भाईजान. तो एक्चुअली मैं तो थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ और रिलैक्स करना चाहता हूँ. एंड एनीवे मेरी अभी शूटिंग चल रही है और पूरे अवार्ड सीजन में चलती रहेगी. तो आई थिंक इस साल मैं अवार्ड फंक्शन से दूर रहूँगा. हाय जी. और हाउ इट्स मिनी एंड लाइक योर फैमिली? बिल्कुल बिल्कुल ठीक. अब ये कुछ ज़्यादा लंबा नहीं चल रहा है कुछ, बस कॉफ़ी वॉफ़ी पीने बैठ जाए हम, है ना. तो आप क्या कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम टॉपिक? हाँ नेक्स्ट का रेड कार्पेट के लिए कुछ और बात करने के लिए होगा तो करेंगे. एक चीज और, जी शाहरुख खान आल्सो वाज पार्ट ऑफ दिस. जी जी जी. परफॉर्मेंस है. शाहरुख वो अभी एमसी हैं, जो लास्ट सेक्शन है शो का उसको कर रहे हैं. आइए सर. नहीं प्लीज. माफी चाहता हूँ. अरे I'm so sorry. I'm sorry guys. Bro. जी. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. विजुअल. थैंक यू. क्या हाल है? बस सर ठीक. ये चलो रे बाजू. One second, please. मैम यहाँ रुकिए ऑन द लेफ्ट. Straight here. Center. Ma'am, center. लेफ्ट में भी टर्न हो जाए. मैम लेफ्ट साइड. Katrina ma'am in the center please. Katrina ma'am in the center. मैम यहाँ लेफ्ट साइड प्लीज. Thank you. Anushka, darling, you were absolutely fabulous. I sent you a message also. I sent you a message. Hey, I wasn't Chama. Chama was very happy. I feel super. We were all sitting and clapping. I want to get to Monday. We'll work that out. Don't worry. I told you. We'll take it, darling. I don't know to New York. Hi, sorry. Good evening. Thank you very much. There was a performance inside of us. Tell Yes. us about the evening. Well, as you know, it's the Lux Awards, which is all about celebrating womanhood, and Shamak Dawa did the act. So we had a lot of fun. We did Kala Chashma, and we did it Shamak Dawa style. But it really is a wonderful evening, and I think it's a great thing that Lux is doing to kind of specifically pick out the memorable characters that women have done this year and award people for it. And it was wonderfully hosted by Shah Rukh and Karan. It has been a legacy, like starting from Mrs. Sharmila Tagore, who was the first brand ambassador, and going on. How do you see it? Like, who has been the most impactful women as far as cinema goes? I think everyone has in their own unique way, and everyone, all the women you mentioned who have been associated with Lux, have always been
very unique in their own way and have always stood for something very particular and beautiful, which is why I think Lux has always chosen these women. And it was a wonderful night, and I think everyone has performed really well and everyone had a lot of fun. As you told us, Mr. Shah Rukh Khan was also part of it. Yes. Remember that he had done an ad also. He's the only man. Yes, we did an ad together for Lux. Any remembrance of that, like, part from the past? I guess, I don't know, I think it's a very unique concept. I think it's a hard concept to pull off, which I think only Shah Rukh can do, because I think he's got that flair and he's just very comfortable with women. So I think it was a really fun ad. And we would like to thank you, like, these days we are getting to know more about you rather than being like totally unaware about it through your Facebook post and everything. How does this feeling to be on? Yeah, it's been a lot of fun. It's been only I think about 5 months that I've been on Facebook, and I'm really having a lot of fun. I think that was the thing that I realized when I finally came onto Facebook after so many years. That you can choose the moments that you want to share with the people who watch you and who follow your work and who see your films, and I've had a lot of fun so far. The one thing which is everyone has noticed that it is very natural. It's not like the no makeup look and the parrot was there like there was a lot. That's a wooden parrot. Yeah, I mean, I think that's what it's supposed to be. It's supposed to be an insight into the part of you which the audience or the people who watch your films do not get to see on screen. So it has to be different, and it has to be the personal moments and the unique moments. Katrina, one of my colleagues was asking, like, since this is part of tribute to the women, there are many acid victim survivors who have come strongly out of it. Would you like to express some words for them, especially like? I think such women like that are. It's very hard to put it into words, because I think women like that are such an immense inspiration. I mean, so many of us, including myself, we get caught up in our little problems. We get caught up in our little world and our careers and what's going on in our life. And then when you sometimes come outside of that bubble which we live in, and which I think I know I live in the film industry, and you come outside and you see how many women actually are suffering out there in the world, like you're saying, women who are actually the victims of attacks, then you really know what suffering is, and then you know what strength of character is, and these are the women who I think deserve to be acknowledged, and that is true strength of character. And for me, these are the women that you learn from, and you learn to be grateful for what we have in our lives. I'll just end this, but one question, like we are all asking, like curious to know about this social, economic turbulence which has happened ups and downs in the last 2 days. Like, do you think it's a good step, or it has repercussions, or it is affecting the low people more? I think tonight is about Lux, and as you said, I think you chose a wonderful topic to speak on, which was women who are victims of the attacks. So I think we'll leave it to that tonight, because I don't want to take away any of the attention from that. But thank you all for coming. Sorry about the wait. Can I request for a ritual which you are following for flying kiss for the cameras? Every ladies who has come over here, they have given. Of course you can. Yeah. Is there a way to do this, or is it anyway? Anyway. We count on 3. Okay, 1. You count then, right? Yes. Okay. You have to do a big smile, okay? Big smile. On the count of 3, we start 1, 2, and 3. Thank you so much. Thank you. One more? Bye. Thank you. Katrina. Thank you. अरे मैं उधर कहाँ जाऊँ? इधर पीछे खड़ी हो ना, वो ऑडियो सुन रही है। विजुअल नहीं मिलेगा। इसका नाम क्या? पिंटू भाई। निकिता खाली। निकिता मागे ना तू जरा। ये निकिता मागे ना मागे। निकिता ये हेडफोन कुठे हिचा? भाऊ की हेडफोन कुठे? वाईट हेडफोन लगाया ना तुम्हाला कॅमेरा मला काय माहिती? अरे मैं है इधर, मैं पीछे उधर बग कर रहा है। एक मिनट छोड़ क्यों गई भाई? छोड़ी क्यों लगी इधर? अरे इस पे लगा था। निकिता मागे ना बाबा।
Hi, I'll come here. Lots of beautiful people. Women are beautiful. They make movies look beautiful. And I'm just glad that I'm part of Indian cinema. Sometimes it feels like a dream, and I'm happy that I'm an actress telling stories in Indian cinema. And it's a pleasure being here. I performed in 2 songs. One is Ek Do Teen, and the other one is Piya Tu Ab To Aaja. So yeah. हाँ जी. एक एक्टर के लिए अवार्ड कितना इम्पोर्टेंट होता है? अच्छा लगता है किसी अब जब आपको अवार्ड मिलता है, एप्रिसिएशन मिलती है, अच्छा लगता है और इट्स अ गुड फीलिंग. हाँ जी. ऑफ कोर्स मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. मेरे ख्याल से हमारी पूरा भारत है. शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ स्टनिंग, और जब वो डांस करती हैं तो उनसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं लगता. और जो दूसरा गाना है पिया तू अब तो आजा, आई मीन उनकी हेलन जी की कितनी तारीफ़ करे उतनी कम है. उनकी अदाएं और उनके जो डांस मूवमेंट्स इतने सुंदर हैं कि एक तो उन्हें दोनों को कोई कॉपी नहीं कर सकता. I've just tried to play my tribute to them, and I'm really happy that I got a chance to dance on their songs. हाँ जी. Who are the major women who have impacted the Indian film industry? I think a lot of them, everyone. एक का मैं नाम नहीं ले पाऊँगी, मगर a lot of them. और अब तो I mean, we're doing everything from direction to acting to camera to everything. So, I mean, we contribute majorly. Shreya, 2 दिन हो गए हैं. Have you become comfortable with the economic turbulence which has happened in the country? हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, पर it's a good feeling, क्योंकि मेरे ख्याल से ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप था, और I'm proud of my Prime Minister that he managed to do it. 2-3 दिन लोगों को कुछ मुश्किल होगी, मगर मुझे लगता है आगे जाके इसका बहुत फ़ायदा होगा हम सबको. श्रेया, ये अवार्ड एक वुमेन ब्यूटी के ऊपर है, तो आपके हिसाब से वुमेन्स की ब्यूटी क्या है? आई थिंक सुंदरता अंदर से झलकती है, और जो आप अंदर फील करते हो वो बाहर निकल के आता है. तो मेरे ख्याल से आप जितना अंदर खुश हैं, जितना आप अंदर हैप्पी फील करते हैं, उतना यू लुक ब्यूटीफुल. आई थिंक ब्यूटी इज़ इनसाइड आउट. Shreya, international political changes like जो अमेरिका में हुए हैं, आपको लगता है उसका इफेक्ट इंडिया में भी होगा? और आप कल एक पार्ट थी कंसर्ट या कुछ प्रोग्राम? जी, मैं एक कॉन्सर्ट की पार्ट थी जो कि कश्मीर के लिए फंड रेजर था, और इसके आगे मैं किसी चीज़ की बात नहीं थी. आई फील वी हैव आई मीन वो अमेरिका है, वी हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन. वी आर इन इंडिया, सो Did you get the chance to meet Mr. Trump? no, I didn't. Are you happy with the final outcome of the elections? मैं भारतीय हूँ, मैं मुझसे भारत के बारे में सवाल पूछ लें आप. आई कांट टॉक अबाउट देम. सो या ठीक है, भारत को पूछिएगा क्या? आपने पूछ लिया. Elder sister, mom. शी लुक्स लाइक माई एल्डर सिस्टर, मगर आज से काफ़ी साल पहले उन्होंने मुझे जन्म दिया था. Very impactful in your life, है ना? Yeah, she's very impactful. She's the most beautiful woman I've ever seen in my life. तो आप लोग जाएंगे तो उससे पहले लाइक हमसे भी मिलवा दीजिए. Mom, एक स्टेप कर लेंगे, वो भी स्टेप my mother. She is the most beautiful woman in the world. Yes, that's why I was mesmerized. या इनसे अभी नहीं, इनसे ये स्कूल में मेरे स्कूल में पढ़ाती थी केमिस्ट्री, और तो मेरे सारे क्लासमेट्स का इन पे बहुत बड़ा क्रश था.
और अभी भी जब मुझे बाहर मिलते हैं तो कहते हैं अच्छा आप नीजा मैम की बेटी हैं। सो यार संभाल के लेके जाइए अंदर भी, मतलब काफी लोग। हाँ मैं इनको ध्यान से संभाल के लेके जाऊँगी। थैंक यू। Look at you, look at- that's you inside. Yes. Yes, you always have questions. How am I part of this evening? I did a film, so they invited me, so I came. No, I'm just attending today, and I'm really, honored that I have been a part. I think it's the first year, so for me, I feel like because it was also my debut. In many ways, I feel like it's both our first years today. Could you just tell impact of which women have been most impactful in Indian cinema? Oh, so many. I think my childhood favorite has always been Madhuri Dixit for me. I think अगर all rounder है, like if there's a word all rounder, तो फिर वो माधुरी दीक्षित है. She's always been. She's just so beautiful. वो इतनी सुंदर है that it's sometimes hard to believe. Her smile, the way she dances, the way she acts. So for me, it's like Madhuri Dixit. Yeah. Thank you, Pooja. We'll keep it short tonight. Yes. Yeah, it just helps. It kind of gives you a little bit of a boost. It makes you feel good. So anything that makes you feel good is very welcome. I think so. That's why it's very important. Yeah, it's always good to be appreciated. आई थिंक बहुत अच्छा एक बहुत ही अच्छी चीज़ की है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एंड आई थिंक आई सपोर्ट इट कम्प्लीटली. आई थिंक जो दिक्कत हो रही है अभी वो सिर्फ 2-3 दिन के लिए रहेगा और फिर we'll be better, but I think it's a great initiative and I think we should all be very proud of our prime minister and support him because I think इससे सिर्फ प्रोग्रेस होने वाला है. That's it. आपको कोई प्रॉब्लम हुई इसकी वजह से? नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है. I'm looking forward to watching it and Beauty Awards, so waiting to see who all are awarded for their beauty, and I think it's going to be an exciting show. I'm waiting for the performances as well. I just heard about the lineup, so Mr. Shah Rukh Khan is probably hosting and performing also. yes, It must be a big attraction for tonight. totally. I think he's always full of life and so entertaining. He doesn't give us even a moment to blink or get bored every time he's performed or hosted, so I can't wait to watch. अदा थोड़ा हिंदी में भी रखना. जी. अदा शाहरुख खान ही है जो लक्स के एड में आते हैं. ज़्यादातर विमेन ही लक्स के एड में रही हैं, लेकिन शाहरुख खान एक अलग रहे हैं जो हमेशा एक बार वो बाथटब में आए थे. जी. एक बार वो आई थिंक उनका जो बाथटब का ऐड था वो बहुत ही मेमोरेबल है हम सब के लिए. आई थिंक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट था. जब फर्स्ट टाइम टीवी पे आया था वी वर ऑल लाइक व्हाट. वो डबल टेक हुआ सबका एंड इट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट वो हर बार कुछ अलग करते हैं एंड ही इज़ नोन फॉर दैट. सो some of my colleagues are like literally bothered about the economic things which are happening. Yes. Has bothered you in any way, like in day-to-day life? no, I didn't have any black money myself. It didn't. जी घर पे कुछ नहीं था. वाइट नहीं है, ब्लैक भी नहीं, दोनों नहीं है मेरे पास. तो मुझे कोई टेंशन नहीं है. बट आई हर्ड जिनके घर में बहुत सारे स्टैक्स हैं मनी के, उनको बहुत तकलीफ हुई होगी. पर आई थिंक बहुत ही ब्रेव डिसीजन जो आपने प्राइम मिनिस्टर ने लिया है. इट्स वेरी ब्रेव, बहुत फियरलेस डिसीजन है एंड इट इज़ गोइंग टू शेक अस ऑल अप मोमेंटरीली, बट आई थिंक इन द लॉन्ग रन इट्स फॉर द गुड. अरे आपका विश्वास इधर भी तेज आवाज में से बोली. क्या हो रहा है?
निकिता निकिता थोड़ी भागे हो निकिता थोड़ी भागे 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 बस 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 थैंक यू Your right side. Except a very couple of them. So definitely a lot of entertainment and celebrating women power and women beauty. अंकिता इस बार आप रेस को लेके काफी चर्चे में रहे इसके ऊपर कुछ इस बार आप रेस फिल्म को लेके काफी चर्चे में रहे तो इसके ऊपर कुछ बोलना चाहो I love you all. I love you three. Okay, thanks. ऐसे इधर डांट रहे हैं आप मुझे. Good to see you. Okay, good, really good to see all of you too. What am I expecting? I'm expecting beautiful women. I want to see all of them together this time. I think that's what makes it special. And first time I'm attending this. I mean, this is the first award for me in the season to attend. So yeah, देखते हैं. Let's hope it's a good start. Even the currency is pink. Yes, of course. What's your take? I think Modi ji is influenced by the film. I would like to believe that. हाँ मतलब let's believe that ना मतलब क्या जाता है अपना बोलने में. But good, at least people are noticing that also. मतलब मैंने नहीं बोला, आपने बोला. मिस्टर बच्चन ने बोला I know. But obviously हम लोग मतलब हो ना हो हम लोग उस चीज़ की खुशी मनाना चाहेंगे ना. I hope इतना impact मतलब जितना impact उसने दिया है पूरी कंट्री को, चेंज ऑफ करेंसी ने दिया है उतनी फिल्म ने भी दिया हो. आई रियली होप. तो मैं मान लूँगी कि हमारी फिल्म की वजह से हुआ है. तापसी पर छुट्टा मिल रहा है आपको उसका? मैं सच्ची बोलूँ आई एम सो लकी राइट नाउ दैट मैं शूट कर रही हूँ हर रोज़. सो 12-13 घंटे की शिफ्ट होती है, घर सिर्फ सोने जाने को मिलता है. तो भी ऐसी हालत नहीं आई है कि मुझे जाके कुछ खरीदना पड़े. जब मेरा स्केड्यूल ख़त्म होगा तब पता चलेगा असल में. But do you think this is a good step and थोड़ा सा प्रॉब्लम जो हो रहा है लोगों को? प्रॉब्लम्स तो होगा ऑब्वियसली, नो टू वेज अबाउट इट. बट आई थिंक इट शुड बी गुड फॉर द लॉन्गर रन. बट वो कितना लॉन्ग होता है रन, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन. सो एवरी टाइम वी से कि अच्छा समवेयर इट हैज़ टू स्टार्ट. सो एक तरह का एक्सपेरिमेंट है. आई डोंट नो इफ इट विल वर्क और नो, बट इट्स वर्थ गिविंग इट अ शॉट इज़ व्हाट आई फील. Tapsi, how true that you are working for Jurwat? I will be happy if I do. I also heard that. So I'll be really happy if I do. Something different for me to do. Tapsi, awards कितने मायने रखते हैं एक्टिंग के लिए? I wouldn't say it will define if I'm a good actor or no. ऐसा नहीं है मुझे अवार्ड नहीं मिलेंगे तो मेरे को ये लगेगा मैं अच्छी एक्टर नहीं हूँ, ऐसा नहीं होगा. एक तरह का वो लगता है कि ठीक है बाकी लोग भी मानते हैं कि यू आर गुड, ऐसा एक तरह का डिक्लेरेशन समझ लीजिए. और दे लुक रियली प्रिटी इन द शेल्फ. तापसी एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि पिंक जैसी एक कामयाब फिल्म दी है जो बहुत कुछ बताती है, एक मैसेज देती है. बहुत सी लड़कियाँ महिलाएं ऐसी उनके खिलाफ किया और उन्होंने फिर जिंदगी शुरू करी वापस से और कामयाब रही. उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दे फाइट. ग्रेट जॉब, यू आर अ लिविंग एग्जाम्पल. हमने तो फिल्मों में एक्टिंग कर ली, ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ. बट रियल हीरोज़ इस तरह की फिल्म के वो लोग हैं क्योंकि इंस्पिरेशन उन लड़कियों से ही मिलती है ऐसा कुछ करने के लिए. मैंने सिर्फ एक तरह से रिप्रेजेंट कर लिया उनको. दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी. आई होप आई हैव डन लिटिल जस्टिस टू दोज हु फील ऐसा कोई मैंने टॉपिक एड्रेस किया जो उनके बिहाफ पे. दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी. आई थिंक दे आर द रियल हीरोज हु आर स्टिल फाइटिंग. तापसी, this film has boosted your confidence. आत्मविश्वास बढ़ा है आपका? देखिए आपके लिए ये मेरी तीसरी फिल्म थी, वैसे मेरी ये 21वीं फिल्म थी. तो ये मेरे लिए एक तरह का मतलब मैं पहले अप्स एंड डाउन्स देख चुकी हूँ. तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया है. हाँ, हिंदी ऑडियंस स्टार्टेड टेकिंग नोटिस ऑफ मी नाउ. दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. अदरवाइज इन माई लाइफ
in my personal life or in the way I see at films hasn't changed. You have started shooting of your new film. Yeah, नाम शबाना, yeah. कुछ बता सकते हैं? अरे अभी निशान बड़ी मुश्किल से कवर करके आई हूँ, कल ही फाइट शूट करी है, तो मेरे हाथ बिल्कुल रेड एंड ब्लू हो रखे हैं इस टाइम पे. सो आई होप आप लोग प्लीज़ मेरी फाइट को अप्रिशिएट करना और कुछ करो ना करो. थैंक यू. राइट हियर. Good evening, Malaika. हाय, गुड इवनिंग. We have been seeing the pictures of the birthday celebrations of your son. बहुत ही अच्छा लगा सबको देख के. Very cute. ऐसा लोगों ने कहा. बच्चा तो क्यूट ही रहेगा ना. सेलिब्रेशन भी क्यूट रहेंगे ना. He's a kid. Celebrations कुछ पता It was fun. A lot of fun. Thank you very much. है? आज की शाम के बारे में बताना चाहेंगे. Like what are you expecting? Mr. Shah Rukh Khan is hosting and probably he's the only man in the women's side. In the categories? Well, I've actually judged the categories, so मुझे सारे जितने भी nominees हैं मुझे पता है, so I'm aware of that and I'm very excited. And जैसे आपने कहा कि शाहरुख is going to be there. I'm always a Shah Rukh fan, so I'm looking forward to that. Thank you. Malaika, Well, I hope all of it subsides in due course of time, and of course, it has been done with an intention for the betterment of our country. Initially, there will be थोड़े बहुत hiccups तो रहेंगे, but I'm sure in due course of time सब settle हो जाएगा. आपको लगता है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए उसका इफेक्ट इंडिया पे होगा कि मतलब are you happy with the results which have come, like Mr. Trump? Well, I'm sure every election has its effects on various nations, and India is no different. As a woman, I would have loved to have seen a woman in power. So I was definitely rooting for Hillary Clinton, but may the best win. And like you know the. Up. Ma'am, up. Madam, center. Excuse me, center. Thank you. Nusrat, straight here. Up. Nusrat. Nusrat, straight. Left, to your left. Ma'am, your right side. To your left side. Nusrat here. Nusrat. Right. Nusrat. प्रॉब्लम्स नहीं फेस कर रहे हैं क्योंकि अब हमेशा जो भी हम करते थे चेक्स और मैं प्लास्टिक कार्ड यूज़ करती थी. सो आई एम वेरी हैप्पी वॉट एवर मोदी जी हैज़ डन. इट्स ब्रिलियंट स्टेप. आई वाज जस्ट टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स. I said, I don't think so anybody has taken such a fantastic step. So I think kudos to Modi ji. Yes. Do you think this is impacting the people like at the world level more, and how is it impacting the film production, daily shootings? No, earlier also our daily shootings, whatever we used to do, it used to go in properly. We still have everything noted with the checks and all. So we've not faced any problems. I'm sure the middle class, as you mentioned, they might have a little problem initially, but later on I think this will they will be aware and it will help them. Now the realization for them is, you know, they're talking, you know, I've seen such videos which is very hard hitting and speaking rubbish about Modi. Initially they will suffer, they will feel this, but if you see ahead, they're going to really appreciate whatever Modi ji has done. This is the first award ceremony which is happening. Shah Rukh Khan has always been only actor who's been part of the brand which is for women and head which are part of it. Yeah, he's a charming person, and he has been here from all the years, and he's been charming all the women. So I think he's a charmer and the right person who's going to be for many more years. And I'm so happy because our next film is with him. अभी फिलहाल 2017 में I'm doing something with Shah Rukh, and Jan I think we'll start the shoot. Yeah, thank you. अच्छा
मैम सामने आके लेफ्ट से राइट करो ऊपर मैम राइट में मैम यहाँ पे मैम सामने मैम ये राइट मैम राइट में कैमरा तमन्ना इधर भी Thank you everyone. Thank you. Tamanna, really good to see you. Good to see you all. You're looking super hot. Tell us what you're expecting tonight. Well, actually बहुत समय के बाद मैं एक अवार्ड फंक्शन अटेंड कर रही हूँ मुंबई में एंड मैंने हमेशा कहा है कि मुझे पर्टिकुलरली मीडिया के फंक्शंस अवार्ड फंक्शंस मुंबई में अटेंड करना बहुत पसंद है क्योंकि आई थिंक पूरी इंडस्ट्री साथ में आती है एंड एक दूसरे को encourage करती है एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. There will be successful films, there will be not so successful films, but at the end we are an industry and I think it's a very happy time when we meet each other and we bond. I think that's what makes the whole process fun. Do you think the award is more about women? Kahiye sir, kahiye. Good evening. Hi. The right color of your dress is like take the forward of legacy of love. Is it inspired by that? No, actually this was the best outfit that my stylist got me. It's as simple as that. I think for me red symbolizes just like how the award says rose gold golden awards, so it's perfect I think for the event. It suits you also, your complexion, your cheeks and everything. How sweet, thank you. That's अभी really नहीं अभी चल रहा है मैडम अभी चल रहा है चालू बिल्डअप हो रहा है. भाई आई थिंक अवार्ड्स आर वेरी दे मेक यू फील गुड. आपने जो एफर्ट डाला है अब अपने काम को जिस तरीके से करते हैं उसका उसको एक सहारने का एक दिन है, एक मौका है, एक मोमेंटो है. So yeah, I think it's very very nice and it's lovely when people get awards and they feel good about it. सर आपके मुंह में घी शक्कर उतने उससे कहीं ज़्यादा कमाए. आई होप सो. See, I know there is a lot of difficulty because of, a lot of, the common man is really facing a lot of difficulty because of this condition right now. But I know for a fact एक अच्छे cause के लिए है and eventually this will turn out to be the right thing to do. So I know that it's difficult right now. The moment is very tense, but from the long run perspective, it's the best thing that's happened to us. Tamanna, Mr. Shahid Khan has been part of the ads which has been for the Lux. Only male star who is part of a women brand and which features women. Your take on this? Well, I think all women love him and he is, a star that goes beyond time, beyond everything. So I think उनसे बेहतर कौन. अच्छा मैं एक चीज़ आपको 1000 का छुट्टा मिला? सर मेरे पॉकेट में सिर्फ 20 रुपए का नोट था और एक 100 रुपए का नोट था. तो भाई मुझसे ज़्यादा रिच इस वक्त पे कोई भी नहीं. तो आपको लगता है this is a good step in like long run? Yes, that's what I felt. That's what I feel that in the long run it's the right thing and जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है. सो इट्स ग्रेट. आई थिंक ओवरऑल आई नो इट्स डिफिकल्ट राइट नाउ. बहुत से लोग बहुत सी मुश्किलों से गुजर रहे हैं इसकी वजह से. आई नो मीडिया में सुनती रहती हूँ बातें but we have no other way. I think we have to start somewhere. Please allow me to ask you this question. आपको लगे तो जवाब दीजिए. बाहुबली के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके बारे में हमने सुना कुछ हैदराबाद एंड वहाँ पे like there was inquiry by the income tax and everything after this declaration. Right. आपको इस बारे में पता चला? No, actually I have no clue. I have no clue. हुआ है कि मतलब they have मुझे कुछ सुनने नहीं मिला but I don't know. As you're saying, I guess I don't know. Maybe you know something I don't. कुछ प्रोड्यूसर्स के लिए about the amount and these. मुझे कुछ नहीं मालूम है इसमें. चलिए अच्छी बात है. आपको इन चीज़ों की दुनियादारी से आपको रहना भी नहीं चाहिए. सब मोह माया है. ओके तमन्ना महिलाओं जी सर मैं हूँ यहाँ पर जी. महिलाओं की बात करें लड़कियों की बात करें बहुत से ऐसे हादसे हिंदुस्तान में रहे हैं जहाँ पे तेजाब फेंका गया है. जी. लेकिन उन्होंने फिर से लड़के जिंदगी शुरुआत करी है और दे आर द रियल फाइटर. Yes. उनके बारे में उनको क्या मैसेज देना चाहिए? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट एंड व्हाट मैसेज यू विल गिव? आई थिंक मैं इस दर्जे पे नहीं हूँ कि मैं उनको कुछ मैसेज दे पाऊँ क्योंकि जिस हादसे से वो गुजरी हैं शायद मैं उनकी पोजीशन कभी समझ नहीं पाऊँ. सो आई जस्ट फील लाइक जो लोग इस किस्म के हादसों से बाहर निकलते हैं और अपनी ज़िंदगी वापस से शुरू कर पाते हैं उनको सिर्फ एक सलाम दे सकती हूँ और ऐसी ताकत
भगवान ऐसे सभी इंसानों को दे बस। My next release that will come in Hindi will of course be Bahubali Part 2. But yes, I am constantly doing South Indian films. I've been actively in the regional films, so yeah, that's where I do a lot of work. How sweet. नहीं, मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा वक्त होता है कि मुझे सिर्फ एयरपोर्ट पे सोने को मिलता है और मैं बहुत आधे तो टाइम नींद में होती हूँ एयरपोर्ट पे, बट ऐसा ऑलवेज सी द फोटोग्राफर्स और उनको एक हाई तो ज़रूर बोलती हूँ। पक्का आप मैं कल एयरपोर्ट पे होने वाली हूँ और मैं आपके लिए तैयार होकर आने वाली हूँ, एकदम रेडी। हाँ जी, इतने ऐसे नेशनल मीडिया पे दे दिया मैंने टिप ऑफ, कल एयरपोर्ट पे होंगी। सॉरी, हाँ जेट की फ्लाइट है। आदाब, गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, सलाम। दादा क्या उम्मीद कर रहे हैं आज अवार्ड नाइट से? उम्मीदें तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, एंजॉय करने आया हूँ और बाकी देखूँगा, शोज़ देखूँगा। पहला शो है ये सीज़न का, अब शुरू होगा स्क्रीन, स्टारडस्ट, फिल्म फेयर, बाकी के। एंजॉय कर। एक नंबर कड़क लग रहा हूँ। अबे लॉन्ड्री से कपड़े आए ना, इसीलिए बे। अरे तू भी है या खुदा। Impactful ladies of the cinema has been most of them that I've grown up on, right from Nargis ji, Wahida ji, Meena Kumari ji, Sharmila Tagore ji, Asha Parekh ji. So मतलब all these ladies have been the pillars of our film industry. So it's not just one. इतने लोगों के साथ मैंने काम किया, मैं क्या बताऊं बेटा, एक रात का कब पड़ेगा। कभी अकेले में आ जाना, मैं बताऊंगा। 1000 रुपया का छुट्टा तो नहीं मिला दोस्त, मगर कार्ड चला रहा हूँ और बाकी कुछ पैसे हैं छुट्टे, वो यूज़ कर रहा हूँ। एक अवार्ड्स, हर अवार्ड्स मायने रखती हैं। सनी के यही अवार्ड, जो भी अवार्ड हो, जिसको भी मिले, हर चीज़ का मायना होता है दोस्त। किस बात के ये अवार्ड की बात कर रहे हैं कि पैसों की बात कर रहे हैं? बड़ो इकोनॉमी होता तो मैं आर्ट स्टूडेंट नहीं होता। जी जी, हाँ जी, हाँ मैं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से लोग हाँ, लेने खेलने देना, उसको खेलने दे। भगवान की कसम, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे लगता है जो कुछ हो रहा है वो सोच समझ के ही कर रहे होंगे लोग। बाकी मेरा इतना भेजा चलता तो शायद मैं कहीं और बैठता। मैं तो यही देख रहा हूँ, अपने आसपास के जितने लोग हैं उनको थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती रहती है, मगर कुछ डिसीजन है, कुछ सोच समझ के लिया होगा दोस्त। इतना बड़ा डिसीजन कंट्री में लेना, कुछ डीप थॉट होगा ना बाबा। अपन कुछ बोलेंगे, तू कुछ बोलेगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है छोटे। हाँ बाबा, गहरी बात है। चलो आता हूँ। गुड लक टू लक्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल यू गाइस। खा पी के जाना, टाइम लगेगा, 12 बजेंगे।
भाई सर वीडियो नहीं ये पहिला सर इकडे चलू घ्या बहुत अवार्ड प्रेजेंट किए जा रहे हैं एंड काफ़ी उनकी सराहना की जा रही है. सो आई एम रियली हैप्पी ये जो इनिशिएटिव है लक्स का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई एम ग्लैड कि आई कुड बी हियर. एक्सपेक्टेशंस जो परफॉर्मेंस है, लुकिंग फॉरवर्ड टू द परफॉर्मेंसेस एंड होस्टिंग करण सर एंड शाहरुख सर, अर्जुन, दे आर ऑल होस्टिंग द शो. सो वो भी काफ़ी फ़न होस्ट है एंड उनको देखने में मज़ा आएगा, सारे परफॉर्मेंसेस देखने में मज़ा आएगा. तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस है. सो या कार्तिक, आप अवार्ड प्रेजेंट कर रहे होंगे जी बोल. हाँ जी. कौन सी कैटेगरी में लाइक जी वो तो अंदर जाके अभी आपको कौन मतलब जो एक्ट्रेसेस रही हैं उसमें मतलब इम्पैक्टफुल रही हैं मतलब सिनेमा में, अगर आप कुछ अपने विचार देना चाहें? आई थिंक ऑफ लेटली दीपिका पादुकोण, वो काफ़ी उनकी जो भी परफॉर्मेंसेस, जो भी फिल्में उन्होंने की हैं वो काफ़ी अच्छी की हैं एंड स्पेशली पीकू हुई, बाजीराव मस्तानी हुई. सो ये सारी फिल्मों में उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छी थी. सो आई थिंक या अगर कोई चूज़ करना पड़े ऑप्शन में, सो शी इज़ द वन. आपकी जो फिल्म आपने शुरू की है उसके हमने स्टिल्स देखे हैं, आप अपने ट्विटर वगैरह पे भी, सोशल नेटवर्किंग पे भी देते हैं जी. कुछ हमें, और एक नई फिल्म भी आपकी, आपने जैसा कहा है कि मतलब लॉटरी लग गया, कुछ ऐसा मतलब हेडलाइन दी थी मैंने दिवाली बोनस कहा था. हाँ दिवाली का बोनस मिल गया. नहीं वो फन. हाँ तो उसके बारे में कुछ बताऊँ मैं आपको. जो पहली अभी मैं जिसका लंदन का स्केड्यूल ख़त्म करके आया हूँ वो है अतिथि इन लंदन एंड इसमें कृति खरबंदा है एंड परेश रावल जी हैं, तन्वी आज़मी जी हैं. सो वो एक फ़िल्म मैं ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट कर दी है एंड कॉमेडी फिल्म है. तो वो एक फ़िल्म है. दूसरी फिल्म अभी रिसेंटली अनाउंस हुई थी जो कि टी सीरीज़ के साथ है एंड लव रंजन जो कि लव सर प्यार का पंचनामा के डायरेक्टर हैं, वही डायरेक्ट कर रहे हैं एंड तो ये एक फिल्म अभी अनाउंस हुई है, वो स्टार्ट अगले मंथ तक होगी. मेरे को एक्टर्स हैं, प्यार का पंचनामा के को एक्टर्स हैं, एक नुसरत भरूचा है एंड एक सनी सिंह है. तो ये अभी ये कास्ट है. उसके अलावा सारी डिटेल्स धीरे धीरे पता लगेंगी बट उसकी फ़ोटोज़ में कुछ क्लिक नहीं कर पाया. मैं अतिथि लंदन में बहुत शूट के दौरान की थी क्लिक, तो वो आपने देखी होगी. तो मीडिया नेट से पहले इस बार हमें बताना क्या पक्का सेल्फी नहीं डाल पाया मैं. नहीं फिर भी मतलब आप सेटल हो गए इस नए इकोनॉमिक मतलब जो मेरे पास ज़्यादा इतने पैसे हैं नहीं, तो वाइट मनी है जितना है तो ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैं सेटल्ड हूँ. हाँ. डू यू थिंक दिस विल हेल्प, लाइक इज अ गुड स्टेप फॉर द फ्यूचर? आई थिंक इट इज़ सबका. आई थिंक लोग ज़्यादा सतर्क रहेंगे, लोग ज़्यादा जितना क्लीन मनी रहेगा उतना ही बेटर है हमारे देश के लिए. सो इट्स अ राइट मूव. पर थोड़ी अभी परेशानियां हो रही हैं लोगों को. थोड़ी परेशानी, आई थिंक इतना बड़ा स्टेप लिया है तो थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट जितना इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हर जगह जहाँ जहाँ परेशानियाँ ज़्यादा हो सकती थी वहाँ पे डेट्स ज़्यादा बढ़ा के रखी, वहाँ पे पैसे यूज़ हो पा रहे हैं. तो आई थिंक इतना नज़र में रखा है गवर्नमेंट ने एंड इतनी परेशानी है, लेकिन वो क्योंकि स्टेप बहुत जल्दी लिया गया, बहुत बड़ा स्टेप था. बहुत इंटेलिजेंट बात किया, ये अभी तक किसी ने नहीं बोला, आपने ये संदेश दिया, ये पहुंचेगा संदेश बहुत ही, आपने मतलब मार्गदर्शन. अच्छा मुझे मालूम है. बारे में भी. अच्छा जी. एक और सवाल था, हमारी कलीग पूछना है, अवार्ड्स कितने मायने रखते हैं आपके लिए? जी अवार्ड्स भी आप इतने सवाल पूछ रहे हो, वो चली गई नहीं. अवार्ड्स भी बहुत वैल्यूएबल है एंड मायने रखते हैं हम एक्टर्स के लिए. आई थिंक एक्टर्स ही नहीं, सब टेक्नीशियंस के लिए भी काफ़ी मायने रखते हैं. हमारी जितने भी हम लोग एक्टिंग करते हैं, हमारे प्रोफेशन में जितना भी चीज़ें करते हैं उसको एंड ऑफ द ईयर सराहा जाता है. सो आई एम रियली हैप्पी कि ये अवार्ड शोज होते हैं और इतने सारे होते हैं. तो हाँ, जीतने में मज़ा ही आता है. और कुछ
मैडम यहाँ पर रुको, एक मिनट। फिर पहले लेफ्ट में रुके मैडम, पूरा सेंटर प्लीज। लेफ्ट साइड मैम। मैम सेंटर। मैम यो सेंटर। मैम लुक के उल्टा कैसा मारता भाई। सेंटर मैम सेंटर। करीना मैडम। मैडम हाँ जी बस। मैम यहाँ पे। करीना जी। एक मिनट। मैम राइट साइड। लेफ्ट में। मैम ये लुक क्या? करीना जी। करीना जी ऊपर। लेफ्ट में। थैंक यू। चलो बैठो अभी। मैडम लेफ्ट में। करीना जी एकदम सामने आपके। करीना जी सामने। डंडा करीना जी। Thank you. What are you expecting from tonight? You have been part of it. Just tell us about it. Well, I think they are felicitating all the Lux ladies and इतने सालों का association रहा है Lux के साथ. I think the greatest thing is that my mother was also a brand ambassador for Lux, my sister also and me also, and my mother-in-law. So I think the whole family has been part of the Lux family, and that's why I think I've made this effort to be here tonight. And probably red represents the legacy of Lux. Well, I think Lux has a lot of colors, red, pink. But yeah, I think everybody will be in red and pink tonight. Mr. Shah Rukh Khan has been the only actor, the male actor who has been part of the brand which is associated with women and ads which have been made on women. Can I tell that? Well, I think girls, women, aunties, they all love Shah Rukh. So I think he's the perfect brand ambassador for Lux. और मैंने भी एक ऐड किया था एक बाथटब में जब शाहरुख बाथटब में थे and we were all around him. So I think he's the perfect brand ambassador. और कोई पूछ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आप किसी को पूछने नहीं देते हो. I think पिक्चर की सक्सेस, एक अच्छी कहानी और रिवॉर्ड्स मायने रखते हैं. बदलाव हुआ है इकोनॉमिक 1500 की नोट जो बंद किए गए हैं और एक अलग तरह से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. मेरे पास सिर्फ 2000 के नोट है, 500 और 1000 नहीं है. I think it's a great step. I think Lux का अवार्ड है तो definitely beauty, skin, all this बहुत important है and it's one of the leading brands in India. So I think that it's going to be, all the beautiful women will be on stage. बोलो. महिलाओं की बात हो रही है क्योंकि लड़कियों की बात हो रही है. बहुत सी ऐसी महिलाएं ऐसी लड़कियां हैं जिन पे एसिड अटैक हुआ, उसके बाद वो लड़के सामने आई हैं, फाइटर निकली हैं. उन महिलाओं को जिन्होंने इतनी ताकत, इतनी शक्ति दिखाई, उनके लिए क्या कहना है? नहीं, आई थिंक जो शक्ति महिला में है, विमेन में है, आई थिंक वो किसी चीज़ में नहीं है. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हम भगवान को भी माता ही कह के बुलाते हैं क्योंकि लड़कियों में ही ऐसी शक्ति है. एक दूसरे जो हम दूसरे सोल को भी जन्म देते हैं, आई थिंक वो एक औरत ही है. तो देयर इज़ नो वन स्ट्रॉन्गर देन अ वुमन. कहाँ 19 की बात अभी क्या? आई डोंट नो अबाउट ग्लोबल सिटीजन. हाँ, और एक लास्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में लक्स इज सिनोनिमस विद ब्यूटी एंड उसके लिए एक अवार्ड किया जा रहा है एंड टू अवार्ड आइकॉनिक Bollywood beauties, characters, etc. I think it's a great idea and I'm happy to be here today. I'm also performing, so that's going to be fun. Yeah, and I'm looking forward to the other performances. क्यों? नहीं है. How are you dealing with this economic ups and downs which have happened? You know, I'm not so worried about myself because I have a card, a credit card, and a debit card. But I know that there are a lot of people
who don't. And I think people who rely on, money every day, vegetable vendors, house help, etc., etc. I think it's really hard for them. मैंने जो भी अपने पास था सब बांट दिया है actually, और मैं अभी कार्ड से गुजारा कर रही हूँ, which is what I think everybody wants. But at least I've distributed whatever I had, because I couldn't bear to see everybody looking so stressed out around me. So yeah. जी नहीं, लाइक आई सेड मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट आई नो कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और बहुत सारे लोग हैं, एंड स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स, इन विलेजेस, आई एम श्योर उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है. आई एम वॉचिंग द लाइन्स आउटसाइड. आई नो द मूव इज़ वेरी गुड एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री. It is a very important thing to do, but I know that a lot of people are facing a lot of difficulty. So I'm trying to help as much as I can, but I only have. कई जो लड़कियां हैं जो एसिड अटैक से मतलब उभर कर आई हैं, तो मतलब आप कुछ उनके लिए कहना चाहेंगी, संवेदना शक्ति भरे शब्द? मतलब I think just to watch them and how they sort of live life with so much confidence and so much love, and just this love for life that they have, and I think it's very admirable. मैं उनको क्या बोलूँगी, I actually am inspired by them and how they lead their lives, and also the people who do stuff like this. I don't even know. I can't even imagine that in this day and age these things are still happening. It's the most disgusting thing. Okay, अदिति, जैसे आपने कहा कि वो लोग जो गांव देहात में रहते हैं उनके लिए यकीनन बहुत परेशानी हो रही है. हम पैसों की बात करते हैं, जिस तरह के मॉडल करते हैं, आपको लगता है बहुत शॉर्ट पीरियड में करा गया, बहुत आनंद फानंद में लिया गया फैसला है? एक्चुअली मेरे को इस सब पे कमेंट नहीं करना है, बिकॉज द थिंग इज़ मैं जो भी बोलूँगी एनीवे वो चेंज नहीं होगा. आई थिंक व्हाट वी शुड डू नाउ इज़ टू ट्राई एंड सी हाउ वी कैन हेल्प द पीपल अराउंड अस. आई थिंक दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग. व्हाट इज़ डन. I think moving forward we have to see what steps we can take to ease everybody's problems. And जैसे मैंने बोला, मुझे और I think बहुत सारे जिन लोगों को मैं जानती हूँ, मे बी उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन माई लाइफ जिनको हो रही है. तो हम इफ ईच ऑफ अस हेल्प्स, आई थिंक we'll tide over this time and then it will be back to normal. बता सकती हूँ? अच्छा नहीं ना. I don't know. See, then they'll scold me. Okay, I'll tell you this much, that the performance that I'm doing is like, it's a big privilege to do it, because I think every girl, especially a dancer, dreams of doing songs like that. आजकल ऐसे गाने बनते नहीं हैं. आजकल इतने beautiful लोग होते भी नहीं हैं. I don't know what it is about the people of that time. They were so stunning. They are timelessly beautiful. To emulate them, to do their songs, to perform to their songs, it's like a way, of respecting them and to sort of keep them alive in our hearts forever. And it's very special, very tough, but very special. So I'm going to leave it at that. I'm not going to tell you what exactly I'm doing, but it's obviously retro and very exciting and tough. Okay, you'll be performing on Shri Devi's number, Madhuri's number, or Zinat Aman's number. अदिति, एक्टर के तौर पे एक रिचुअल चल रहा है फ्लाइंग किस. If you One more. Ma'am, yeah, look here. Center, ma'am. Excuse me, ma'am. Madam, straight here. Center. Well, it's extremely honored to be a part of this brand, and it's a lovely experience working with all those beautiful ladies, and of course with Charlotte too. Can I ask you, who has been the most impactful women as far as cinema goes? Well, it's very, very difficult to mention one person because I feel all of them are beautiful, very talented, and that's it.
do you remember the ad which Shah Rukh Khan was part of? Like, he's the only actor who has been part of the brand as a which precisely works for women for women. Yeah, of course I You had remember. done the ad, the part. Yeah, I remember that. Like to share their memories. Well, the ad itself, it's a beautiful memory to remember. It's something very different and very different from other ads. So we really enjoyed shooting for that. And, What do you think is taking the legacy of Lux and what you have been carrying for so long, for all these years, among the upcoming actresses? there are many more to come. And of course, as I said before, I can't just name one person. All of them are beautiful. Even then, if you would like to take some. No. Thank you. I'm with them. Thank you. हेलो कैसे हैं आप I'm always happy. It's always a happy evening for me. Like you spread happiness, that's why. Thank you. Fabulous red from your side. Yeah, I don't know. I'm just in love with it's a bloody red. And I think rose petals, Lux, rose, petals, red. It's all in sync. Probably the legacy of Lux. Maybe. And now have you recovered from your leg? Yes, I have. Finally. Yes, I did. I had a bad bout actually of a neck injury after I got out of Jhalak and then got into malaria. So I'm feeling fit, healthy and very, very good. जब आप फिल्मफेयर में आई थी थोड़ी बुझी थी. थोड़ी सी थी because उस time पे ऐसा सा maybe it was setting in that time, but आपको क्या लगता है कौन इम्पैक्टफुल वुमेन रही हैं हमारी भारतीय सिनेमा या हिंदी सिनेमा में? एक नाम नहीं है. I think हर वो एक्टर, हर एक फीमेल एक्टर जिन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार निभाए हैं, नॉट जस्ट ऑन स्क्रीन लेकिन ऑफ स्क्रीन सोसाइटी में हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ छोटा कंट्रीब्यूट करते हैं. सबसे बड़ी contribution I think as women is to be able to be ourselves. That's the biggest contribution we can make to society, and I think a lot of women have done that in this past year. I will like to name. I'm very proud to actually associate myself with Parched, the film, and I feel very happy कि starting from Leena to Tanishta to Radhika, I think all of them. Radhika की फिल्म फोबिया आई थी, तो आई जस्ट फील वेरी वेरी हैप्पी यू नो दैट वुमेन आर कमिंग आउट एंड डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क. सो मेरे लिए ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसी फिल्म के साथ और ऐसे लोगों के साथ जुड़ पाई हूँ. आप एक मार्गदर्शन करिए. हमारे कलीग पूछना चाह रहे थे, बातचीत चल रही. कई जो महिलाएं उन पे एसिड फेंका गया ऐसे, क्योंकि ट्रिब्यूट का समय है ना आज. जी सॉरी. पर वो उभर के सामने आए, हिम्मत रखी उन्होंने. तो आप अपने शब्दों में उनके लिए कुछ प्रोत्साहन या कुछ विशेष कहना चाहेंगे? आई थिंक उनके लिए क्योंकि वो बहुत उस चीज़ को सरमाउंट करके खुद एक अपनी उसी इंडिविजुअलिटी के साथ बाहर आए हैं, ये हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग बात है. तो आई थिंक हमको अपनी छोटी छोटी डे टू डे चीज़ों में जहाँ पे हम लोग इनसिक्योर फील करते हैं, टू कम आउट इन दी ओपन एज हु वी आर एंड इन आवर ओन सर्कमस्टांसेस, आई थिंक वी नीड टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम फॉर बीइंग एबल टू कम आउट लाइक दैट. प्रॉब्लम सब खत्म है. देयर इज पीस एवरीवेयर. इवन इफ यू हैव द मनी यू कांट स्पेंड इट. इससे रेस्ट एंड पीस की बात क्या हो सकती है? I think in the long run, yes, definitely, and I'm all for supporting this. I think there's a lot lying in dumps, and it's a cleanliness drive. जैसे स्वच्छ भारत actually अब स्वच्छ होगा. So yes, definitely, yes. बहुत मायने रखता है. हम लोग अपने लिए और अपने से ज़्यादा अपने ऑडियंसेस के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए काम करते हैं, और एक उस चीज़ का वैलिडेशन, अप्रिसिएशन, रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है. तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हु डजंट लाइक टू बैग अवार्ड्स. या
मैंने अभी एक्चुअली कुछ साइन नहीं किया है आफ्टर पास्ट, बट एज एन व्हेन आई साइन आई थिंक आई हैव, मैंने खुद पे अपने आप पे बहुत प्रेशर डाल लिया है एक्चुअली टू बी एबल टू मीट माई ओन स्टैंडर्ड्स. टू बी एबल टू, बहुत प्रेशर है यार यहाँ पे. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द प्रेशर जो मैं अपने आप खुद फील करती हूँ, जो मैं डील कर रही हूँ कि मैं अपने आप पे बहुत प्रेशर डाली और मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए. बट yeah, it's easier said than done. Maybe I feel the pressure brings out the best in me, and I will be able to pick up the right project very very soon in the coming future. And आप सबको पता लग जाएगा. जी, coming to you now. I'm open to all kinds of roles. I don't want to put myself in a box. और मैं एक कलाकार के लिए एक्चुअली सही माने में हर तरीके का किरदार, अपनी पिछले किरदार या अपने पिछले काम से हटकर कुछ अलग करना, I think that's what an artist is made of and should be viewed like that. So I think it's very important. Thank you. क्या है, लोग कह रहे हैं कि मतलब ज़्यादा हो गया, तो probably next रेड कार्पेट. Sorry? हाँ, अभी के लिए ना it's too much ना. Okay guys, so I'm taking a break until we meet next time. क्या आज एक रिचुअल बना है फ्लाइंग किस का, तो अगर आप मोबिलाइज करें कैमरा. You want me to come away from the podium and give it? आप बेहतर समझते हैं. मैम लेफ्ट प्रोफाइल में यहाँ पे आप स्लो मोशन. थैंक यू सो मच. Thank you so much. फास्ट फॉरवर्ड हो गया. बैंक, पेट्रोल पंप. राइट में. प्लेजेंट इवनिंग टू यू टू. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. यस. Yeah, I think it's a great platform. I don't think we've had an award which has celebrated women and only women and focused on women the way that the awards tonight are, and I think that's a fantastic gesture on the part of Lux and the entire team at Z. So I'm looking forward to a different award function, some new types of awards, and the women who are achievers at the top of their game being honored and shown respect the way that they should. सर मैं शर्ट पहन के आने वाला था और टी शर्ट से काम चला लिया मैंने. जी, अगर करप्शन हटाना है तो, और जब करप्शन इतना ज़्यादा हो तो शायद थोड़ा हार्ड स्टेप लेना ज़रूरी होता है. आई थिंक इट्स स्टिल अर्ली टू कॉमेंट ऑन how it will go because there are certain practicalities attached to the change in currency and the notes that have been changed. So it's going to be difficult. Everybody is finding it difficult. I'm sure we will also find it difficult. But if it leads to less corruption, if it leads to less black money, if it leads to less fake money, which is also a very big issue that we've been facing, then I think it's a bold step and I think it's in the right direction. I will be starting shooting for Padmavati in a couple of weeks. That's what I will be doing next. And Rangoon is what I have already finished and it will be out in February. सर मैं शुरू किया नहीं है तो जब शुरू करूँगा तो फील मिलेगा. But it's an amazing honor to work with Mr. Bhansali. I loved his last film and I've loved many of his films and I think he's a fantastic filmmaker. And I'm very excited about the role that he has offered me. This is the first time me and Deepika will be working together, which is great. This is the first time me and Ranveer will be working together, which is great. It's a really big film and it's a really challenging film to do as an actor. That's what excites me the most. After working with Vishal Bhardwaj, to be working with Sanjay Bhansali is, you know, it's an amazing place to be. I feel very fortunate as an actor. क्या लगे? अच्छा रोज. हाँ जी. हेलो, हाउ आर यू? जब माधुरी मैम हो तो रोजेस को कौन देखता है?
Thank you. Thank you. Shahid, is there questions over like we just wanted to pose for the camera. Here? And we keep meeting you in the award functions, in the coming award functions. Thank you so much. क्या करूँ चुप तो रहे किस मेरी ओके छोड़ो ना भाई क्या Namaste. Yeah, namaste. There's lots of turbulence happening here. Turbulence happening. आपके दिल में? Happy evening. Yes. We all die for this smile of yours. Thank you. 36,000 watts. Well, thank you so much for the compliments. Madhuri, please tell us something about your association with Lux और आज की शाम के बारे में अगर आप बताना चाहें. You have been part of. Yes, I have been part of the Lux Golden Awards, and I think it's a wonderful thing because they are recognizing all the female characters in movies, all the heroines, all the actors who have contributed so much towards the industry, and all of them are women today. They're going to be awarded, they're going to be felicitated, which is a wonderful thing, I think. No, I think there have been a lot of women who have impacted cinema, and there will be a lot of women who will impact cinema in the future. And it's wonderful that all of them will be recognized in this way. Well, I think what happens to them is terrible. मतलब कोई हम सोच नहीं सकेंगे, imagine नहीं कर सकेंगे कि how much pain they go through. But I think every woman who stands up and takes a stand and becomes a voice for all these women, जो पीड़ित सब औरतें हैं, उनके लिए जब वो आवाज़ बनती हैं, one of them stands up and says this has to stop. And I think that's wonderful to see. Well, you know, I think कुछ सोच के ये बात की गई है और I hope it is for the good. अच्छा है और I think people are following it और उसे थोड़ी तकलीफ़ हो रही है आम जनता को, लेकिन अगर ये तकलीफ़ कुछ अच्छा ला सकती है आगे तो of course it's most welcome. Oh yes, of course. One picture they want.